Hello everyone, how are you all? I hope you all are very good. In the previous video, we discussed about the concept of syllogism and you can say statement and conclusion. So today we will solve some examples for the statement and conclusion. So yesterday in the previous video we discussed about that there is a format in the statement and conclusion, that is these are the statements and these are the conclusions. And for this these are the options. Options are depend on the conclusions. If the two conclusions are there, only two conclusions, this is the first conclusion and that is the second conclusion. So for these two conclusions, the options will be these. And for the further conclusions, if the conclusions are 3, if the conclusions are 4, that time the options will be different. So here we will solve the first question for this. Some jeeps are cars. So to solve this question, I have told in the previous video also, we can solve the question with the two methods or two ways. First, to draw the all possible diagrams for the question, but it is very difficult to draw the all possible diagrams. In the first process, one more option is there that we can draw that type of possible Venn diagram in which the conclusion is not following the first conclusion or the second conclusion. That is little bit easy and a little bit short. But we will solve the question with the second process. And the second process is this, that we will convert this statement into the diagram. The first is some jeeps are cars. So these are the jeeps. Some jeeps are cars and these are cars. Some cars are trucks. So this is the diagram for the statement. So you can say that this is the statement and this is the pictorial form of the statement. That is some jeeps are cars and some cars are trucks. Here we will solve the conclusions now. The first conclusion is some jeeps are trucks. So some jeeps are trucks. It means to see this diagram, we can say clearly that in the statement it is given that the relation is of jeep and car is given and the relation of car and truck is given. In this the direct information is given only. Direct information, or you can say the active information. So this is the active information or direct information if this is given in this statement. So here there is no relation between jeep and truck. So if the relation is not given in the jeep or truck, that time we cannot say that the jeep can be truck or not, because we are not sure. If we are not sure, it means that is not the conclusion. What is conclusion? Conclusion is a result. तो अगर जब हम जीप और ट्रक में कंफ्यूज्ड हैं कि कुछ जीप ट्रक हैं या नहीं है, वी आर कंफ्यूज्ड, तो जो चीज कंफ्यूजन में है, जो चीज डाउट में है, वो क्या नहीं होगी, फॉलो नहीं होगी. इट मीन्स द फर्स्ट conclusion is doubtful, not follow. So some jeeps are truck. That is doubtful, not follow. Doubtful, not follow. Some trucks are not cars. Some trucks are not cars. Up from the diagram, you can say that some trucks are not cars. But what is this? This is not the possible diagram. That is the pictorial form of the statement. And in this it is given that some cars are trucks. It is given only some cars are trucks. It is not given that some trucks are not cars. For example, if we draw for this all the possible diagram, that is some cars only for this statement. Some cars are trucks. Some cars are trucks. So here we can say that this is car and this is truck. Some cars are trucks. If you write this is the car and this is the truck, that time also that is not the wrong. That is also the correct. That is the possible diagram for this statement only. Some cars are truck. That time only you can say that car and truck. That is also the possible diagram for this statement. Some cars are truck. So here you can say that this is truck and these are cars. That is also the possible diagram for this. Some cars are trucks.
So here some trucks are not cars, that is not following from this possible diagram also, that is not following from this diagram also. So from these two diagrams it is not following, that time also it is got that is doubtful not for. So in the first question you can say that some jeeps are truck, that is not following, and some trucks are not cars, that is also not following. It means these both conclusions are not following. So neither. The fourth option is the correct option for this question. Let's see the next example. I hope this is very clear to you. In the next example, put the statements in this question. In the second question also, there are two statements and two conclusions. The first statement is all ships are God. And the second statement is some gods are lions. For these, the conclusion are some sheep are lions, the second is all gods are sheep. Okay. Let's solve this question. All sheep are gods. All sheep. These are sheep and these are gods. Some gods are lions. Now, what is given? It is given that only some gods are lions. Only this is given. Some gods are. It means the relation is given for the gods and between god and lion. Now the conclusion is some sheep are lions. Some sheep are lions. Here it is saying that some sheep are lions. So it means what is this? In this there is no direct and indirect information given between sheep and lion. So no indirect information it is given in the question and no direct information it is given. It means the first is also doubtful not follow. That is also doubtful not follow. That is not the surely not follow, that is doubtful not follow. It means ships can be lion, can be. It is not necessary that they are. It means the result is not given. All gods are sheep. All the gods, सारी की सारी जो god हैं, वो क्या हैं? Sheep हैं. So it is not given because all the sheep are god. It is given only. So that is also doubtful not follow. That is also not the surely not follow. ये भी surely not follow नहीं है. That is also the doubtful not follow. It means doubt है. We are not sure. That is only doubt है. अब ये दोनों क्या देंगे? Not following. It means the option will be, the correct option will be neither first nor second follows. अब यहाँ पे some sheep are lions है. Some sheep are lions है. यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ जो lion है वो क्या नहीं है? sheep नहीं है. लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहाँ इस conclusion की जगह पे आपको conclusion दिया होता कि some sheep are not lion. अब यहाँ पे हमने क्या किया है? Some sheep are lions, doubtful not follow. इसका मतलब क्या हो गया कि वो गलत है कि कुछ भेड़ लॉयन है, ये जरूरी नहीं है. लेकिन अगर हम इसका ऑपोजिट लेते हैं, इसकी बजाय हम केवल ये लेते हैं कि some sheep are not lions है, that time also that is a doubtful not follow. हम इसके लिए भी नहीं कहेंगे कि ये क्या है, कुछ जो sheep हैं वो लॉयन नहीं है. ये भी हमारे लिए क्या हो गया? डाउटफुल नॉट फॉलो हो गया, बिकॉज इट इज नॉट गिवन है. तो रिलेशन, द इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. दोनों ही तरीके से क्या नहीं दे रखी? इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी हुई. तो इसका मतलब क्या हो गया? डाउटफुल नॉट फॉलो फॉर द बोथ. नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड ऑप्शन. हाउ इफ द ऑप्शंस आर गिवन टू यू, दैट टाइम यू आर थिंकिंग दैट then will the third option will come. थर्ड ऑप्शन जो है वो कब आएगा?
So here we will discuss about the third option. The question is some pairs are pairs. The second statement is some pairs are off. First conclusion. The first conclusion is some pairs are off. And the second conclusion is no pairs is off. Here, some pairs are pairs. Some pairs are pairs. Some pairs are four. Some pairs are four. Now, some pairs are four. Some pairs are four. It means these are the bits and these are the four. There is no relation in the statement because that is also the pictorial form of the statement. So in this there is no relation between fits and pop. So it means that is doubtful not follow. That is doubtful not follow. In this no fit is pop. कोई भी फिट्स क्या नहीं है, पोप नहीं है. तो फिट्स और पॉप के बीच में क्या नहीं दे रखी, रिलेशन नहीं दे रखी, ना तो डायरेक्ट रिलेशन और ना ही इनडायरेक्ट रिलेशन. आपको यहाँ इस डायग्राम से ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे जो फिट्स है वो क्या नहीं है, पोप नहीं. आपको केवल ये नहीं सोचना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि ये एक पिक्टोरियल फॉर्म है स्टेटमेंट की. तो यहाँ से आपको ये नहीं चेक करना है कि यहाँ पे तो जो फिट्स है वो क्या नहीं दे रखे, पोप नहीं दे रखे. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सही हो गया. लेकिन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर है स्टेटमेंट की, जो कि हमने पिक्चर में कन्वर्ट कर दी है. इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड आल्सो दैट आवर माइंड रीड फास्ट द पिक्चर्स. तो यहाँ पे फिक्स और पॉप के बीच में क्या नहीं दे रखा, कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा. कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, डाउटफुल नॉट फॉलो हो जाएगा, क्योंकि दैट इज नॉट द श्योरली नॉट फॉलो. अब ये हमारे लिए क्या हो गए, दोनों ही गलत हो गए. लेकिन नहीं, इसमें एक चीज में लिख रखा है कि सम फिट्स आर पॉप है, कि कुछ फिट्स हैं वो क्या है, पॉप है. एक जगह लिख रखा है कि नो फिट इज पॉप. कोई भी जो फिट है वो क्या नहीं है, पॉप नहीं है. इसका मतलब क्या होगा कि एक जगह रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है कि या तो फिट्स क्या है, पॉप है, या फिर क्या नहीं है, पॉप नहीं है. लेकिन हमें इतना नहीं पता, हम इतना श्योर नहीं है कि हम किसको फॉलो करें, इसको फॉलो करें या इसको फॉलो करें. दोनों में से कोई एक तो होगा ही. कैसे, अगर आपको ये लगता है कि जैसे कई बार होता है ना कि भाई कल मैं स्कूल आऊंगा. अब ये क्या हो गया, मैंने कल के लिए बात कर दी कि या तो मैं कल स्कूल आऊंगा या फिर नहीं आऊंगा. दो में से कोई एक सिचुएशन बनेगी कि या तो मैं कल जो स्कूल अगर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं झूठ बोल रहा था. अगर स्कूल नहीं आया इसका मतलब मैंने क्या हो गया कि मैं सही बोल रहा था कि कल मैं स्कूल नहीं आऊंगा. अगर मैं कल स्कूल नहीं आ रहा हूं, कल अगर मैं स्कूल नहीं आया तो क्या होगा कि या तो मैंने सच कहा था या फिर मैंने झूठ कहा था. अगर मैं आ गया तो झूठ बोला, और अगर मैं नहीं आया तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने क्या कहा, सच बोला था. तो कोई भी एक चीज होगी, या तो मैंने झूठ बोली या सच बोली. दो में से कोई एक सिचुएशन बनेगी, या तो मैं आऊंगा या फिर मैं नहीं आऊंगा. यहाँ पे भी कोई चीज है कि सम फिट्स आर पोप. कुछ फिट्स क्या है, पोप है. या तो ये वाली चीज सच होनी चाहिए या फिर ये वाली सच होनी चाहिए. दो क्योंकि दोनों क्या हो गए, डाउटफुल नॉट फॉलो हो गए कि सम फिट्स आर पोप है, ये भी हमने गलत कर दिया. अब हम ये कहते हैं कि कोई भी फिट पोप नहीं है, ये भी हमने गलत कर दिया. इसका मतलब क्या होगा, दोनों चीजें तो गलत नहीं हो सकती ना, केवल एक ही चीज गलत होगी, या तो ये गलत होगी या ये गलत होगी. लेकिन हमें ये श्योर नहीं है कि ये वाली गलत है या ये वाली गलत है, ये वाली सही है या ये वाली सही है. हमें इन दोनों में से ये नहीं पता कि है कौन सी सही. अगर हमें दोनों में से सही नहीं पता कि दोनों में से सही कौन सी है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम वहां पे ऑप्शन रख देंगे कि या तो केवल ये फॉलो होगी या फिर केवल ये फॉलो होगी. अब एक चीज देखते हैं कि या यानी कि इधर और की सिचुएशन कब पॉसिबल होगी. इधर और की सिचुएशन कब पॉसिबल होगी, जब जिनमें से कोई दो में से एक सच हो और हमें श्योर नहीं हो कि इन दोनों में से कौन सी सच है. पहचान कैसे होगी, पहचान के लिए क्या होगा कि दोनों कंक्लूजन क्या होंगे, डाउटफुल नॉट फॉलो होंगे. ये भी डाउटफुल नॉट फॉलो होगा और ये भी क्या होगा, डाउटफुल नॉट फॉलो होगा. सेकेंड चीज है, इसका भी सब्जेक्ट और इसका भी सब्जेक्ट, इसका भी ऑब्जेक्ट और इसका भी ऑब्जेक्ट क्या रहेगा,
सेम रहेगा। दोनों के अंदर क्या होगा, यानी कि ये नहीं है कि यहाँ पे फिक्स और यहाँ पे पैड को दे दिया हो, तब की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ जब यहाँ पे भी फिक्स और यहाँ पे भी क्या हो, यहाँ पे भी पॉप और यहाँ पे भी क्या हो, पोर्ट हो। तो उसका मतलब क्या हो गया कि दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन होगी कि एक तो क्या होनी चाहिए, अफर्मेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और जो सेकंड होगी, जो दूसरी होगी, उसके अंदर क्या होगा, एक जो होगी वो कंडीशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे होने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ना होने की बात कर रहा है। तो अगर यहाँ पे होने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ना होने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों में से है तो कोई एक सच है, लेकिन हमें क्या नहीं पता, कंडीशन पता नहीं कि तो ये वाली सही है या फिर ये वाली सही है। तो उस टाइम पे आपकी कौन सी आ जाएगी, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। तो दीज थ्री कंडीशंस, these are the three conditions to check that there is either or condition is following or not following. अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन नहीं है तो आपका इधर फर्स्ट और सेकंड की जो ये कंडीशन है, जो ये ऑप्शन है, ये फॉलो नहीं होगा। अगर तीनों में से कोई भी एक नहीं है तो वहां पे इधर फर्स्ट और की कंडीशन नहीं होगी। तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करें और वहां से हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। अगर तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है तब हम चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट इधर और की कंडीशन है या फिर नहीं है। ओके, अब इसी को चेक करते हुए हमने दूसरा क्वेश्चन किया है। तो लेट्स चेक द नेक्स्ट एग्जांपल। What is the next example? Some tests are all jacks are Jones. All jacks are Jones. The second is no John is Jack. Conclusion. The first conclusion is some jacks are George. The second one is no Jack is Jones. These are the two conclusions. Here, what we will check? We will check that what statement is given. All jacks are Johns. All jacks are Johns. No John is George. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो जॉर्ज है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब ये चेक करने के लिए कि जो ये जॉर्ज है बिकॉज दैट इज द पिक्टोरियल फॉर्म, लेकिन अब यहाँ से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि किस किस के बारे में बात कही गई है। जॉयक और जॉर्ज के बीच में बोला गया है या जॉन्स और जॉर्ज के बीच में बोला गया है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम एक लाइन लगा लेते हैं। अब हमें ये पता चल जाएगा कि जो जॉर्ज का रिलेशन दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, जॉन्स के लिए दिया गया है। अगर जैक्स के लिए दिया होता तो हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अब रिलेशन केवल इन दोनों के बीच में दिया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं कंक्लूजन को, सम जैक्स आर जॉर्ज, कुछ जो जैक्स हैं वो क्या है, जॉर्ज है, नहीं है। कौन सी कंडीशन है, डाउटफुल नॉट फॉलो या श्योरली नॉट फॉलो, दैट इज श्योरली नॉट फॉलो। कोई भी जैक जॉर्ज नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कोई भी जोन्स क्या नहीं है, जॉर्ज नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जैक सारे के सारे किसके अंदर है, जोन्स के अंदर है। तो अगर सारे के सारे जैक्स जोन्स के अंदर है तो क्या नहीं होंगे, जॉर्ज नहीं होंगे। ये नॉट फॉलोइंग जरूर है लेकिन श्योरली नॉट फॉलो है, दैट इज नॉट द डाउटफुल नॉट फॉलो। हम लिखते थे ना डाउटफुल नॉट फॉलो, तो ये डाउटफुल नॉट फॉलो नहीं है, दैट इज द श्योरली नॉट फॉलो। नो जैक इज जॉर्ज, नो जैक, कोई भी जैक क्या नहीं है, जॉर्ज नहीं है, दैट इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, कोई भी जैक क्या नहीं है, जॉर्ज नहीं है। अब देखो मैंने क्या कहा था आपको कि तीन कंडीशन होनी चाहिए, तीनों कंडीशन अगर हमें तो वहां पे हम इधर और की जो कंडीशन है वो चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट से जॉर्ज ऑब्जेक्ट से, दैट इज अफर्मेटिव, दैट इज नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट भी ठीक है, ऑब्जेक्ट भी ठीक है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। ये अफर्मेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया,
ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो गई, लेकिन जो थर्ड कंडीशन है आपकी वो फॉलो नहीं हो रही है। थर्ड कंडीशन कौन सी है जो कि फॉलो नहीं हो रही? थर्ड कंडीशन है कि सम जैक्स आर जोज। तो जो कुछ जैक्स हैं वो क्या है? जोज हैं। यहाँ पे आपकी क्या नहीं है? डाउटफुल नॉट फॉलो नहीं है। अगर ये डाउटफुल नॉट फॉलो नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि थर्ड कंडीशन के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे डाउटफुल नॉट फॉलो चाहिए। सेकंड है, ये भी डाउटफुल नॉट फॉलो होना चाहिए। नो जैक इज जोज है, कोई भी जैक क्या नहीं है? जोज नहीं है। अगर कोई भी जैक जोज नहीं है वो क्या है? सही हो गई। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये फॉलो हो रही है। तो केवल हम इन दो चीजों को देख के, सम और नो, इन दोनों को देख करके हम क्या नहीं कर सकते? इधर और की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सकते। तीनों कंडीशन जब हम चेक करेंगे तब जाकर के हमें पता चलेगा कि भाई कौन सी कंडीशन है इसमें और कौन सी नहीं है। यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन है वो थर्ड कंडीशन क्या हो जाती है? फुलफिल नहीं हुई। और अगर फुलफिल नहीं होती, हमने रिजल्ट देखा तो फर्स्ट क्या हो रहा है? नॉट फॉलो हो रहा है। तो सेकंड क्या हो जाएगा? फॉलो कर रहा है। तो इस ऑप्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। ओनली सेकंड फॉलो। नो जैक इज ए जोज। क्लियर? लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस। That is the second type. The next type for the syllogism, or you can say the statement and conclusion. इसमें क्या है? हमने फर्स्ट जो टाइप की थी उसमें क्या था? टू स्टेटमेंट एंड टू कंक्लूजन। लेकिन जो सेकंड है उसमें क्या हो जाएगा? थ्री स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन कैन बी टू, और कंक्लूजन कैन बी मोर देन टू। So first is some books are pencils. Second is all pencils are sharpeners. And the third is some sharpeners are erasers. These are the three statements. Now the conclusion. First conclusion is some books are erasers. The second one is some books are sharpeners. Okay, let's solve. The first statement, some books are pencils. Some books are pencils. All pencils are sharpeners. All pencils are sharpeners. Some sharpeners are erasers. Some sharpeners are erasers. So this is the pictorial form of the statement. Here we can see that the relation is given between books and pencils. कुछ जो book है वो क्या है? Pencil है. That is the direct information. In the next it is given that all the pencils are sharpeners. सारी की सारी pencil क्या हैं? Sharpener हैं. अब यहाँ पे relation किस किस के बीच में दिया हुआ है? Relation is given between pencil and sharpener. But there is an indirect relationship also between books and sharpeners. How? If all the pencils are sharpeners, that time the sharpener circle will cut the book circle also. So this is the indirect information. Indirect information मतलब डायरेक्टली हमें दी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी डायग्राम को देख के हम क्या कर सकते हैं? हम बता सकते हैं कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन बुक एंड sharpeners. In the third it is given some sharpeners are erasers. Now we will see the conclusion. Some books are erasers. कुछ जो बुक्स हैं वो क्या हैं? इरेजर हैं. तो इसका मतलब क्या होगा? डाउटफुल नोट होगा. Some books are sharpeners. कुछ जो बुक्स हैं वो क्या हैं? शार्पनर हैं. तो कुछ जो बुक्स हैं वो शार्पनर हैं. It is given in the indirect means it is given indirect way से. तो इसका मतलब सेकंड क्या हो गया? आपका फॉलो हो गया. तो for this question the answer will be second option. So I think now you are saying that this is very clear and that is very easy for you also. Am I right? Okay.
The next question. Let's see the next example. The sixth example. What is that? Some hands are he hands. Some hands are he hands. Next is some cocks are peacocks. And the third statement is some peahens are peacocks. Some peahens are peacocks. The conclusions are given that the first conclusion is that some hens are peacocks. The second conclusion is some peahens are cocks. Some peahens are cocks. And the third one is some cocks are hens. Okay. So these are the three statements. The first is that some hens are peahens. Some hens are peahens. That is peahens. Some cocks are peacocks. So here what are given? Hens and peahens. And these are cocks and peacocks. So these are not relating to these. So we can check the next information. Some peahens are peacocks. Some peahens are peacocks. That is some peahens are peacocks. Now we can read this. Some cocks are peacocks. Some cocks are peacocks. So this is the pictorial form of the statement. Some hens are peacocks. कुछ जो hen है वो क्या है? Peacock है. लेकिन there is no relation, direct and indirect. It is given. It means the first is doubtful, not follow. Second one is that some peahens are cocks. Some peahens are cocks. That is also the doubtful, not follow. Third one is that some cocks are hens. Some cocks are hens. इसका मतलब क्या हो गया? That is also the doubtful, not follow. अब देखो यहाँ पे. These are the three statements. These are the three statements and these are the three conclusions. अब जब three conclusion होंगे तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब तीन conclusion होंगे उस टाइम पे आपके जो ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. चेंज क्यों हो जाएंगे? तब बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं. ओनली फर्स्ट फॉलोज बन सकता है, ओनली सेकंड फॉलोज बन सकता है, ओनली थर्ड फॉलोज बन सकता है. तो एक ऑप्शन तो ये चेंज हो जाएगा. फिर उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी फॉलोड, सेकंड एंड थर्ड कैन बी फॉलोड. फिर हो सकता है फर्स्ट एंड थर्ड कैन बी फॉलोड. फिर एक ऑप्शन हो सकता है कि इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज एंड थर्ड फॉलोज. फिर ऑप्शन हो सकता है कि इधर सेकंड एंड थर्ड, इधर सेकंड और थर्ड एंड फर्स्ट कैन बी फॉलोड. फिर एक ऑप्शन हो सकता है कि इधर फर्स्ट और थर्ड एंड सेकंड कैन बी फॉलोड. फिर एक ऑप्शन और भी बन सकता है. ऑप्शन क्या बन सकता है? फर्स्ट, इधर फर्स्ट और सेकंड, इधर सेकंड और थर्ड, इधर फर्स्ट और थर्ड. ये भी ऑप्शन हो सकता है. और एक ऑप्शन हो सकता है ऑल कैन फॉलो, और एक ऑप्शन हो सकता है नन कैन फॉलो. तो इसके अंदर जब कंक्लूजन में मोर देन 2 हो जाते हैं तो उस टाइम पे आपके क्या हो जाएंगे? आपके ऑप्शंस भी जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएंगे. तो उस टाइम पे आपके जो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं. तो अब हम क्या करेंगे? हम ऑप्शन को बनाने के हमें क्या होना चाहिए? ऑप्शन को हम बाद में चेक करेंगे. उससे पहले क्या होना चाहिए? हमें खुद ये पता होना चाहिए कि क्या हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें पता चल गया कि ना तो ये फॉलो कर रहा है, ना ये फॉलो कर रहा है और ना ही ये फॉलो कर रहा है. और तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं? डाउटफुल नॉट फॉलो कर रहे हैं. तो हमारे लिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा? नन फॉलोज. अब एक और चीज हो जाता है, जब ये ऑप्शन हो जाते हैं मोर देन 2, जब ऑप्शन हो जाते हैं तो एक आपको ऑप्शन दे दिया नन फॉलोज का और एक आपको ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज का. उस टाइम पे क्या हो जाता है? थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं. कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं? हमने केवल यहाँ पे चेक कर लिया दैट इज नॉट फॉलोइंग, दैट इज नॉट फॉलोइंग, दैट इज नॉट फॉलोइंग. कोई भी क्या नहीं कर रहा है? फॉलो नहीं कर रहा है.
और माइंड में क्या होता है, माइंड में होता है कि यहाँ पे नन ऑफ दिस दिया हुआ है, ये ऑप्शन हम चेक ही नहीं करते, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसका हमें पता ही नहीं है कि ये नन फॉलोज भी दिया हुआ है, बस हम केवल ये देख लेते हैं कि नन ऑफ दिस, और उस टाइम पे हम क्या कर देते हैं, इसको ठीक कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। बिकॉज clearly we can see that there is no conclusion which is following। अगर कोई भी conclusion follow हो ही नहीं रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा none follows, और तब हमें चूज कौन सा करना पड़ेगा, none follows। तो आप इस चीज को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें कि यहाँ पे अगर none follow दिया हुआ है, अगर आप देख लेते हैं तब भी, और अगर आपको नहीं दिख रहा है तब भी, अगर आपको none of these दिख रहा है तो उससे पहले आपको क्लियरली सारे के सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे कि क्या किसी के अंदर none follows दिया हुआ है। अगर none follows दिया हुआ है तो you will choose that option, none follows, not the none of these। Okay, the next question is some motors are books, some motors are books। Second option, second statement, some scooters are motors। The third one is all girls are scooters। The conclusion, some girls are motors। Second one is some girls are books। The third conclusion is some scooters are girls। And the fourth conclusion is no girl is a book। These are the conclusions which are more than two conclusions. It means there are how many conclusions? Total 4 conclusions are given. So here we are taking the options, the different options, which type of option we can take. The first is first and third follow, first and third follow। The second conclusion is second and third follow। The third conclusion is first or second follow। The fourth is first, second and third follow। And the fifth option is either second or fourth, either second and fourth, second or fourth and third follow। Now we will solve the question. In the first statement it is given some motors are books, some motors। So here we can do the diagram, some motors are books। Some scooters are motors, some scooters are motors। All girls are scooters, all girls are scooters। So this is the diagram। अगर थोड़ा सा बड़ा बनाए हमें, some motors are books, some scooters are motors, some
scooters are motors, and all girls are scooter. All girls are scooter. Now we will show the first conclusion. The first conclusion is given है some girls are motors. कुछ जो गर्ल्स हैं वो क्या है, मोटर हैं. तो some girls are motor. Direct relationship is not given. तो अगर direct relationship is not given, it means the first one is a doubtful, not follow. The first one is a doubtful, not follow. The second one is a some girls are books. कुछ जो गर्ल्स हैं वो क्या हैं, बुक्स हैं. अब सम गर्ल्स है, रिलेशन तो डायरेक्ट नहीं दी हुई है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं दी हुई, तो इसका मतलब क्या करेंगे हमें, दैट इज द डाउटफुल नॉट फॉलो. डाउटफुल नॉट फॉलो सेकंड. थर्ड है सम स्कूटर्स आर गर्ल्स. सम स्कूटर्स आर, कुछ जो स्कूटर हैं वो क्या है, गर्ल है. तो सम स्कूटर्स आर गर्ल बिकॉज ऑल द गर्ल्स आर स्कूटर्स. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका श्योरली फॉलो. फोर्थ ऑप्शन है नो गर्ल इज ए बुक. कोई भी जो गर्ल है वो क्या नहीं है, बुक नहीं है. तो ये भी क्या हो जाएगा आपका डाउटफुल नॉट फॉलो. अब देखो हमने चेक किया, सारे के सारे चेक कर लिए. यहाँ पे क्या हो गया, डाउटफुल नॉट फॉलो, ये भी डाउटफुल नॉट फॉलो. फोर्थ है वो भी डाउटफुल नॉट फॉलो. और थर्ड है वो क्या आपका फॉलो कर रहे हैं. अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं, अभी तो हम केवल ऑप्शन चेक कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ऑप्शन चेक नहीं भी करते हैं तो भी हमें पता होना चाहिए. अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो इसके अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके अंदर क्या हो, सम स्कूटर्स आर गर्ल, कि केवल ये आपका फॉलो होता हो. अब अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है, अब अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है तो क्या होगा, हमने देख लिया इसके अंदर कि भी केवल अकेला थर्ड फॉलो हो रहा है जो कि ऑप्शन के अंदर प्रेजेंट है नहीं. अगर बाय चांस अगर ये ऑप्शन के अंदर प्रेजेंट होता, उस टाइम पे क्या होता, हम इसको चूज करते हैं कि सम स्कूटर्स आर गर्ल्स बिकॉज़ दैट इज द फॉलोइंग. और जिस टाइम पे ये फॉलो हो रहा होता, अगर मान लेते हैं हमें एक और ऑप्शन होता, जिस ऑप्शन के अंदर है लिखा होता कि भी ओनली थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो, और उस टाइम पे आप इसको क्या कर देते, करेक्ट कर देते, और आपका क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता. क्वेश्चन गलत क्यों होता है, क्वेश्चन गलत होता है क्योंकि हमने इनको चेक तो कर लिया, डाउटफुल नॉट फॉलो आ रहे हैं, और डाउटफुल नॉट फॉलो आ रहे हैं, एक ही केवल ऐसा था जो कि क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है. लेकिन अगर आपको, मैंने आपको बताया था कि अगर डाउटफुल नॉट फॉलो कंक्लूजन्स बनते हैं तो उस टाइम के ऊपर आपकी एक एलिजिबिलिटी तैयार हो जाती है. कौन सी, कि हो सकता है कहीं ना कहीं इधर और की कंडीशन फॉलो हो रही हो. तो इधर और की कंडीशन क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या किसी के अंदर इधर और की कंडीशन फॉलो हो सकती है, बिकॉज दीज थ्री कंक्लूजन्स आर डाउटफुल नॉट फॉलोइंग. तो फर्स्ट चेक किया हमने, यहाँ पे सम गर्ल्स है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, मोटर्स है. और बाकी के सेकंड और फोर्थ के अंदर कहीं पे भी गर्ल के साथ क्या नहीं है, मोटर नहीं है. लेकिन सेकंड और फोर्थ के अंदर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी गर्ल्स है, यहाँ पे भी गर्ल है, यहाँ पे भी बुक है, यहाँ पे भी बुक है. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो गए, सेम हो गए. डाउटफुल नॉट फॉलो, डाउटफुल नॉट फॉलो, ये भी दोनों क्या हो गए, ये कंडीशन भी फॉलो हो गई. दो कंडीशन आपकी क्या हो चुकी हैं, फॉलो हो चुकी हैं. अब हमें क्या करना है, हमें थर्ड कंडीशन को चेक करना है कि थर्ड कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है. तो जो आपकी थर्ड कंडीशन है वो कंडीशन क्या थी कि एक क्या होनी चाहिए, अफर्मेटिव, और एक क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए. तो यहाँ पे क्या है, सम गर्ल्स आर बुक है, तो ये क्या है, अफर्मेटिव हो गई. और नो गर्ल इज ए बुक है, ये क्या हो गई, नेगेटिव हो गई. इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, तीनों की तीनों कंडीशन क्या हो रही है, फॉलो हो रही है. और जब तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ के बीच में क्या हो जाएगा, इधर और की कंडीशन हो जाएगी. किसकी कंडीशन हो जाएगी, इधर सेकंड और फोर्थ, एंड थर्ड क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, एंड थर्ड फॉलोइंग. और ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन किसके अंदर है, ये ऑप्शन आपका इसके अंदर, द फिफ्थ ऑप्शन. तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. So these are the examples. Now we will check the more examples, and that are, let's see. Example number 8. What is example number 8? Some grapes are apple. Some grapes are apple. Some apples are bananas. Third is all bananas are guavas.
And here the statement fourth is also given, and it means the fourth statement is all no guava is pomegranate. No guava is pomegranate. These are the four statements. It means these are the conclusions. The conclusions are first conclusion. The first conclusion is no grape is a pomegranate. The second one is some guavas are grapes. Some guavas are grapes. Third one is some guavas are apples. And the fourth one is no banana is pomegranate. These are the four statements and these are the four conclusions. यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दोबारा से आपके ऑप्शन चेंज हो जाएंगे. अब ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, जो भी ऑप्शन रहे हम केवल क्या कर लेंगे, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं. या फिर अगर आप कहें तो शॉर्टली हम क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं. द फर्स्ट वन इज नॉन फॉलो. सेकंड ऑप्शन इज सेकंड एंड थर्ड. द थर्ड ऑप्शन इज इधर फर्स्ट और थर्ड. एंड द फोर्थ वन इज third and fourth, and the fifth option is none of these. None of these कब आएगा, none of these आएगा जिस टाइम पे इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका क्या ना करे, फॉलो ना करे. और जब कोई भी ऑप्शन फॉलो नहीं करे तो उस टाइम पे हम किसको चूज करते हैं, none of these को चूज करते हैं. तो लेट्स सी, some grapes are apples. Some grapes G-P, some grapes are apples. Some apples are bananas. Some apples are bananas. No guava is pomegranate. कोई भी guava क्या नहीं. All bananas are third क्या है? All bananas are guavas. All bananas are guavas. G-U guavas. No guava is pomegranate. कोई भी guava क्या नहीं है, pomegranate नहीं है. इसका मतलब क्या होगा, पोमीग्रेनेट क्या हो गया, अलग हो गया. लेकिन किससे अलग है, यहाँ पे 4 सर्कल दिए हुए हैं, चारों सर्कल में से ये है किससे अलग है. इसका मतलब रिलेशन किसके साथ दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है केवल गुआवा के साथ है. दैट इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप. ये कौन सी रिलेशनशिप हो गई, डायरेक्ट रिलेशनशिप. लेकिन एक और रिलेशनशिप बनती है, किसके साथ बनती है, बनाना और पोमीग्रेनेट की रिलेशन बनती है. और जो बनाना और पोमीग्रेनेट की रिलेशन बनती है वो है आपकी इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई, अपीयर हो रही है. पता चल गया. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंक्लूजन. फर्स्ट कंक्लूजन है कि नो ग्रेप इज पोमीग्रेनेट. कोई भी ग्रेप क्या नहीं है, पोमीग्रेनेट नहीं है. अब कोई भी ग्रेप पोमीग्रेनेट नहीं है, इसकी और इसकी क्या हो गई, रिलेशन कोई दे नहीं रखी, ना तो डायरेक्ट रिलेशन दे रखी और ना ही क्या दे रखी, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है. तो जब डायरेक्ट भी नहीं दे रखी और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी नहीं दे रखी, इसका मतलब क्या हो गया, डाउटफुल नॉट फॉलो. तो जो फर्स्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका, डाउटफुल नॉट फॉलो. सेकेंड है सम गुआवाज आर ग्रेप्स. कुछ जो गुआवा है वो ग्रेप्स हैं. डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो ये क्या हो जाएगा आपका, डीएनए, डाउटफुल नॉट फॉलो. थर्ड है सम गुआवाज आर एप्पल्स. कुछ जो गुआवा है वो एप्पल है. बिल्कुल सही है, सम गुआवाज आर एप्पल्स. कैसे है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, गुआवा और एप्पल की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है. किसके थ्रू बनी, बनाना के थ्रू. बनाना इज द मीडियम. नो बनाना इज पोमीग्रेनेट. कोई भी बनाना क्या नहीं है, पोमीग्रेनेट नहीं है. अब सारे के सारे बनाना किसके अंदर है, गुआवा के अंदर. और कोई भी गुआवा क्या नहीं है, पोमीग्रेनेट नहीं है. और अगर ये पोमीग्रेनेट नहीं है तो क्या हो जाएगा कि कोई भी बनाना है वो क्या नहीं होगा, पोमीग्रेनेट नहीं होगा. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप से हमें पता चल रहा है कि कोई भी बनाना क्या नहीं है, पोमीग्रेनेट नहीं है. और कोई भी पोमीग्रेनेट क्या नहीं है, बनाना नहीं है. तो थर्ड भी क्या हो जाएगा, फोर्थ भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं. ये दोनों क्या है, डाउटफुल नॉट फॉलो. अगर हम इन दोनों को चेक करते हैं तो यहाँ पे ग्रेप्स है
और यहाँ पे क्या है, गुआवा है, ये ग्रेप्स है, ये क्या है, पोमीग्रेनेट है। तो कौन सी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, कंडीशन में ये वाली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, केवल थर्ड और फोर्थ, केवल जो ये दोनों हैं, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, फॉलो हो जाएंगे। तो आई थिंक नाउ दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। Keep practicing, it will be more clear to you. Thank you.